अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा पीरियड्स शॉर्टेज होने की वजह से जो है मैं एक क्लास जो है रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ। तो नाउ वी हैव चैप्टर 5 मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट वी हैव टोटल 20 मार्क्स इन दिस चैप्टर फॉर मिड टर्म एग्जाम। ओके, तो इन दिस 1 मार्क के क्वेश्चन जो है 4 आएंगे आपको, प्लस 2 मार्क्स के 3 और 4 मार्क्स का एक और 6 मार्क्स का एक। तो जो है सिर्फ आपको जो है 6 मार्क्स के एक आएंगे और 4 मार्क्स का एक आएगा। ओके, तो 6 मार्क्स के जो है दो क्वेश्चंस प्रोबेबली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द फर्स्ट वन इज explain the market equilibrium with the fixed number of firms with the help of diagram. Okay, you have to study this chapter for your midterm as well as for your final exam. So let us study. So in this question, you can see this कि मार्केट इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है। बेटा कल की क्लास में हम पढ़े थे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम करके। तो जो है नाउ हियर वी आर लर्निंग मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे मार्केट का यानी टोटल मार्केट का डिमांड और जो है टोटल मार्केट का सप्लाई, it will be equal. Okay, as the market demand and so much the supply will be there in the market. Okay, understood? So in economics, market equilibrium is a condition where a market price is established through competitions, okay, such that the amount of goods or services sought by buyer is equal to the amount of goods and services produced by the seller. तो एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे जो है जितना डिमांड जो है मार्केट में है, यानी कि कस्टमर इज डिमांडिंग फॉर पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज एंड सो मच, मतलब उतना ही जो है सप्लाई भी होगा वो पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज का। ओके, एंड प्राइस विल बी सेट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। तो ऑटोमेटिकली क्या है, इसका प्राइस मार्केट सिचुएशन इज डिसाइड कर डालता है। ओके, तो हियर जो नो कंपनी विल फिक्स, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर क्या है, दे आर द प्राइस टेकर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस इट इज ऑटोमेटिकली will be fixed. Okay, so in it means in perfect competitive market, price of a commodity or a product is determined by the help of both supply and demand. Okay, फोर्सेस, कौन सा फोर्सेस है, डिमांड का है और सप्लाई का। ये दो फोर्सेस मिलकर जो है क्या है, योर प्राइस, मार्केट प्राइस विल बी डिसाइडेड। दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइस मैकेनिज्म। ओके, you have to make this very important point. Okay, this is called as a price mechanism. तो जो है as you know, प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है has told this mechanism as a invisible hand. Okay, so hope I take that key you must have understood what is market equilibrium. Okay, now let us understand this market equilibrium with the help of this graph. Okay, now the x axis shows that की quantity करके, okay, y axis will show the price. Okay, यहाँ पे क्या है बेटा, as you know, डिमांड एंड सप्लाई का शायद आप लोगों को थोड़ा जो है एक आइडिया है, फिर भी लेट मी एक्सप्लेन with the help of this chart and graph. See, demand curve is, for example, price for a commodity, for example, okay, 5 रुपीज है, 10, 15, 20, 25 है, 30 है। ओके, और क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, फॉर दिस प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कस्टमर इज फॉर 5 रुपीज, दे आर डिमांडिंग 30 यूनिट्स ऑफ अ commodity. For 10 rupees, 25. For 15, 20. For 20, 15. Like that. Okay. Now you can see here, as the price increases, the commodity demanded is decreasing. Okay, you can see that कि जैसा जैसा प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड
you can see that the commodity demanded is decreasing. Okay, so this shows that the price increase हुआ तो demand क्या होता है? Decrease. If price decreases, demand will increase. Okay, this is very common. जब कोई प्रोडक्ट हमने जो चीज़ हमने होना है प्रोडक्ट होना है, अगर कम प्राइस पर मिल रही है तो हमें क्या करती है उसका 1 लेने के 2 लेती हैं, करेक्ट है? तो उसका डिमांड पर्टिकुलरली चाहे वो एनी अदर इवन इफ वी पुट इन दिस इनटू दिस सिचुएशन वी विल बाय 2 और 3 प्रोडक्ट लाइक दैट। अगर वही वही सेम क्वांटिटी का अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होता है इन इन स्पाइट ऑफ लाइक 2 खरीदने का हमें क्या करती हैं 1 खरीदते हैं। तो इफ दीज़ नंबर्स अगर हमें प्लॉट कर रही ग्राफ पर तो यू कैन सी हियर for 5 rupees 30 correct, okay, for 10 it is 25, for 15 it is 20 like this। अगर ये पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करेंगे तो क्या है व्हाट इज दिस, तो ये कर्व क्या है स्लोप हो रहा है, ओके डाउनवर्ड में आ रहा है बिकॉज ये हाइयर पास है। ओके द हाइएस्ट पॉइंट हियर इन द ग्राफ इज 30 रुपीज राइट। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पॉइंट्स गिरले को आ रहे हैं। So this shows that the demand curve is downward sloping from left to right. Okay, understood? You have to keep this in mind. Okay, always demand curve will be downward sloping from left to right. Okay, whereas the supply curve exactly opposite of demand curve. Okay, जब देखो for example a price of a commodity is 5, 10, 15, 20 like that and the quantity supplied by a firm, quantity supplied by a firm for 5 rupees because it's very less price, the company will not supply more, okay, 10 units supply करने ready हो रही, okay, whereas अगर जब price increase हो रहा है तो कंपनी वाले क्या कर रही 5 units increase करें 15 पर 20, for 20 they are ready to supply 25, for 25 they are ready, they've increased, for 30 they've still increased, okay, because this will be profitable for them। ओके तो अगर इसे प्लॉट करेंगे हम तो यू कैन सी हियर ओके इट इज सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ओके हाँ तो बेटा व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू ओपी वन देन विल सी व्हाट विल हैपन हियर। ओके तो यहाँ पे जो है व्हेन ओपी वन हो रहा है तो जो है प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डेफिनेटली क्या होता है डिमांड इंक्रीज होता है। ओके देयर विल बी एक्सपेंशन इन डिमांड। तो व्हेन प्राइस फॉल्स ओके डेफिनेटली suppliers will not be happy to supply for such a low price। okay तो quantity supplied will be less। एट दिस सिचुएशन क्या होता है मतलब मार्केट में क्या होता है एज आई टोल्ड यू बिफोर देर विल बी अ प्राइस मैकेनिज्म। तो अंडर दिस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अंडर दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट तो कस्टमर्स व्हाट दिल डू इज तो सबसे तो पहले जो है क्वांटिटी सप्लाइड इज वेरी लेस। तो फ्यू कस्टमर्स तुम्हारे मेरे जैसे क्या करते हैं अरे भाई जो है क्वांटिटी बहुत कम है तो थोड़ा प्राइस प्राइस जो है ज्यादा देकर भी खरीद लेंगे हमें घर में स्टॉक रख लेंगे करके सोचते हैं। करेक्ट है तब ऑटोमेटिकली क्या होता है थोड़ा पैसे जो हमें ज़्यादा दे रही हैं यानी कि प्राइस ज़्यादा दे रही हैं तो देन ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होता है देन अगेन मार्केट विल फिक्स टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके देन इन द अदर सिचुएशन ये जब प्राइस गिरने से ये हुआ ओके द अदर सिचुएशन इज व्हाट फ्रॉम ओपी दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डेफिनेटली कस्टमर्स विल नॉट बी हैप्पी। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल डिक्रीज देयर डिमांड इट विल कम टू OQ2 ओके OQ2 OQ2। तो तब क्या होता है सप्लाई क्या होता है जब प्राइस इंक्रीज होता है डेफिनेटली सप्लायर्स विल बी हैप्पी दे वांट मोर मनी। ओके तो व्हाट दे विल डू इज दे आर रेडी टू सप्लाई फॉर Q3 राइट। ओके तो ओपी से जो है क्या है ओपी से ओपी टू हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर बट द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस देर विल बी अ इंक्रीज इन सप्लाई बट डिक्रीज इन डिमांड। ओके तो एट दिस सिचुएशन तो जो सप्लायर्स रहती हैं फर्म वाले रहती हैं उन्होंने क्या करती हैं अरे एक्सेस डिमांड हो गया उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया स्टॉक हो गया तो व्हाट दे डू इज
चलो भी थोड़े कम पैसे हमको जो है क्या है, हमें हमारा स्टॉक को हमें ख़त्म करेंगे कर को बोल को ऐसा प्लान करते हैं। तो कम प्राइसेज़ जब ऑटोमैटिकली क्या होता है, वो प्राइस फिर फॉल होता है। तो देन अगेन मार्केट विल फिक्स दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो ये मैकेनिज्म में क्या होता है बोले तो मार्केट का सप्लाई फोर्स और डिमांड फोर्स की वजह से ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी फिक्स। ओके, तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन। नाउ विल सी द प्रॉपर पॉइंट्स, ओके, हाउ टू एक्सप्लेन। Okay. So in the above diagram, as you know, you have to write this heading. Then after that, O axis represent the quantity of demanded and supply. Okay, OY axis measures price. DD curve is market. DD curve is market supply curve. Okay, point E represent equilibrium point. In this point, both SS and DD curve intersect each other at the level of equilibrium price, OP and equilibrium quantity OQ. Okay, तो यहाँ पे इतना OQ is a equilibrium quantity and equilibrium price is OP. If price falls from PO to P1, that time quantity of demand is greater than the quantity supplied. Okay, quantity demanded is greater than the quantity supplied. Okay, this you have to mention. Okay, is called as a excess demand. This point you have to mention beta. This continues until demand equal to supply, QD QS. तो जो है ये क्या होता है, ये प्राइस जो है जो है शिफ्ट होते रहता है, डिमांड शिफ्ट होते रहता है जब तक कि जो है व्हेन इट विल कम टू अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन द सेकंड पॉइंट इज इफ द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी2, ओके, ओपी टू ओपी2, that time supply is greater than demand, OQ3 is greater than OQ2, is called the excess supply. Okay, or as a result market price is decreased and once again the equilibrium can be achieved in E point. Thus if there is any imbalances in the equilibrium, that time invisible hand directs and guides both the producer and consumer towards equilibrium. Jazakallahu khaira. Hope beta you've understood this 6 marks question. Inshallah in next video I will post the other second 6 marks